every 2 months I'm coming crying to them on WhatsApp ki sir itna backlog ho gaya hai, itni cheezein karni hai. But they were so, I would say सपोर्टिव एंड मतलब एक वो सब कुछ थे. दे वर मेंटोर. दे वर गोना टेल यू कि बेटा लेजिट दे यूज्ड टू टाइम थिंग्स. स्टार्टिंग के 15-20 डेज तो मैं ऐसे हुए थे कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज आई वाज वेरी लो इन मॉक्स. मतलब वेरी वेरी लो इन मॉक्स. मैं टेस्ट पे भी इतना आउट परफॉर्म नहीं करती थी. डीआईएलआर इज मोर तुम्हारे डर को हटाना, नॉट एबल टू नॉट Yeah. डू द सेट, बिकॉज वो बाद में तो हो जाता है. बाद में पूरी तरह से 15 मिनट में सेट सॉल्व हो जाएगा, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 40 मिनट हाथ पैर कांपने लग जाते हैं. इट टुक मी अराउंड starting में for the 1 or 1.1 it took me around 2 to 5 2 to 2.5 hours to analyze it alone. Gaurav sir and Hani sir used to like say कि don't miss the analyze. Legit everyone used to, even I used to miss the not analyze it, skip to the next mock, let it go. But that is not the key for improvement. नहीं होगा improve अगर हम analyze नहीं करते तो. I think the proper revision that I did was for QA, because DILR के more was आपके दिमाग में conceptual base. Once you are able to get in उस area में अगर आप comfortable हो जाते हो. First thing that I did started was because my IIM Lucknow interviews was in just 7 days, where I got the date, and 7 days I had my best call for interview. The second question was really took me off the track. Like what? Okay, so which God do you believe in? So me, I am a Sindhi, so we worship Guru Nanak Ji. So I told him about that. So he was like, tell me 5 management skills which aligns with his teachings. It's about consistency. It's about keeping faith. So you need to, and most of all, being regular. That is the first piece of advice that I think the only advice that Gaurav sir and Hani sir kept giving us in the starting of the intro lectures. Huge congratulations on securing your IFT Delhi convert. Thank you so much. This whole journey was a lot, but I think in the end it's all worth it, really. Can you give me a brief background of your school, college, and what were you doing before CAT? So I studied from Delhi Public School Indore with commerce as my background. Other than that, I did BCom honors from NMIMS Indore, and I think these were the areas where I really realized that I'm so much interested into accountancy and then finance. So first financial accountancy, then corporate finance, and all of these subjects. And yeah, after that, coupled with a lot of math subjects such as interest in these kind of subjects, the interest in my extracurriculars, and especially in field of management, I thought CAT would be the perfect fit for me, being a future manager with a specialization in finance. So I decided for CAT, and I took a 1 year gap after my graduation, because I thought that I would need that kind of dedication and time to give to my CAT prep. And yeah, I scored 91 percentile in my 91 percentage in my 10th, 97 in 12th, and in graduation also it was around 78%. Okay, what inspired you to pursue MBA in the first place? Um, like I told, I've been really inclined towards finance as a subject. It really grew more when I learned more about it in my BCom honors, learning subjects like financial statement analysis, corporate finance, financial modeling, with varied amounts of different types of accountancy subjects. I was very sure that I want to do my future studies in finance only, and coupled with the extracurricular activities that I did in my college. So I was the president of my cultural club. I also organize international internship experience competition. So these kind of real time management experiences highlighted that this is what really suits me, managing things, and this is what really would go on to me in the future. And so I decided MBA would be a good fit for me. From which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? I got call from IIM Lucknow, I'm Kozhikode, Indore, and all the cap calls. Other than that, I got calls from IFT, and currently I've converted IFT Delhi. Other than that, I've converted 6 IIMs, including IIM Indore, HRM, IIM Kozhikode, LSM program, and with some of the cap calls, being specific Kashipur, Sirmaur, and Trichy, and yeah, that is, and Ranchi, yes. So because I have a very keen towards finance, IFT Delhi is really known for its finance prospects, its placements, and the deep knowledge that they give into that. So I'm gonna join IFT Delhi. Okay, were you working or interning while preparing for CAT or you took a break?
I was interning. I did not took a complete break, but at the same time, I did not opt for a full-time job because I knew how much hectic it gets to manage a full-time job with a CAT preparation. So I was interning in the field of financial modeling with a fashion apparel company. Okay, since you mentioned that you were interning while preparing for CAT, right? So I would love to know how did you balance your CAT preparation along with the internship work? Because internship is also like a job responsibility only. You have works to do and एक टाइम लिमिट भी होता है कि 8 to 9 hours काम भी करना है and all. So how did you manage both? तो आई थिंक इस चीज में तो आई वुड गिव हैट्स ऑफ टू हनी सर एंड गौरव सर. Legit, I remember in every 2 months I'm coming crying to them on WhatsApp ki sir itna backlog ho gaya hai, itni cheeze karni hai. But they were so, I would say सपोर्टिव एंड एट मतलब एक वो सब कुछ थे. दे वर मेंटोर. दे वर गोना टेल यू कि बेटा लेजिट दे यूज्ड टू टाइम थिंग्स कि बेटा ऐसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो. एंड वी यूज्ड टू बी लॉस्ट इन द स्टार्टिंग. जनरली बाद में चीजें बहुत सॉर्टेड हो गई थी वंस आई गॉट कंफर्टेबल विद. सो आई वाज अ बैच 1 स्टूडेंट. आई स्टार्टेड इंटर्निंग आफ्टर मे. तो मई तक मेरा बैकलॉग हो गया था बिकॉज ग्रेजुएशन था एंड देयर वाज फाइनल एग्जाम्स थे. सो जब मैंने इंटर्नशिप चालू करी एंड मेरा बैकलॉग भी था, आई थिंक 9 to 6 इंटर्नशिप करने के बाद यू रियली गेट टायर्ड. सो उसके बाद का जो पूरा टाइमलाइन था मैनेजिंग योर बैकलॉग, उसके साथ में मॉक्स भी चालू हो जाते हैं जुलाई के अराउंड के टाइम पे. प्लस हमारे टाइम पे द टेस्ट वाज अ लॉट. सो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक मॉक्स के पहले टू एस द मॉक्स वाली का जो मेथड था वाज टू एस योर टेस्ट. देयर वर डिफरेंट डिफरेंट टाइप, अलग अलग स्ट्रीम्स में सबके काफी टेस्ट थे. So I think that was really Gaurav sir really helped us into that, making a very streamlined timetable जिसमें हम खुद को भी समय दे पाए. And I think when I came from job, I took a rest from 1 to 2 hours. I started my prep at 8 and 10 से 12 रेगुलर क्लासेस होती थी. तो वो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा होते थे एंड द मॉर्निंग के जो 2 घंटे एक्स्ट्रा होते थे, सो 6 hours आई यूज टू गिव एवरी डे टू माई कैट प्रेप बिकॉज आई हैड अ बैकलॉग ऑल्सो. सो दिस वॉज 3 to 4 months के जो स्टार्टिंग का टाइम था टू क्लियर द बैकलॉग. उसके बाद इट वेंट फाइन वंस माई बैकलॉग वॉज क्लियर्ड अराउंड ऑगस्ट. उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली ऑन टू माई मॉक प्रेपरेशन. एंड इफ यू आर रियली मैनेजिंग योर टाइम प्रॉपरली जॉब के साथ में एक बार वो चीजें मैनेज हो जाती हैं. बिकॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटर्नशिप इज उसके बाद बैकलोड नहीं रहता है. व्हेन यू आर इनटू अ जॉब उसके बाद भी दे गिव यू अ लॉट ऑफ काम. तो इंटर्नशिप में क्या है कि एक बार आप घर चले गए तो यार छूट गए हो आप, अब तुम तुम्हारी पढ़ाई करो. सो दैट वाज दैट. तो वो चीजें में गौरव सर ने और स्पेशली गौरव सर ने बहुत हेल्प किया था. सो या उनके बिना तो नहीं हो पाता. बिल्कुल नाइटमेयर बन जाता बहुत ज्यादा. So how did you come to know about Elite Skate? कोई आपको recommend किया था या फिर आप खुद रिसर्च करके पता लगाए थे? So, before I started my CAT journey, I researched about all the coachings. So, I was unsure कि मुझे ऑनलाइन जाना है ऑफलाइन जाना है. पहले मैंने सारी ऑफलाइन कोचिंग के बारे में पता किए थे, उनके थोड़ी थोड़ी क्लासेस भी लिए थे. सो मैंने आईपी मैट का एग्जाम भी दिया था एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ traditional pedagogy IMS and all of these coachings follow for their CAT and IPM programs. Now I was me being a weak person from aptitude, having no maths in 11th and 12th and ऐसा कोई लॉजिकल भी बहुत दिमाग तेज नहीं है मेरा. तो आई वाज लाइक कि आई वांट समवन हु रियली पुट्स कॉन्सेप्ट्स इनटू माय ब्रेन व्हिच हनी सर एंड गौरव सर रियली डिड. जब मैंने उनके बारे में देखा था, सो श्वेता अरोरा वाज दिस पर्सन. यूट्यूब पे यू माइट नो हर. उन्होंने एक रिव्यू डाला हुआ है. इट्स बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ आई गेस उस टाइम पे 2 साल पहले इट वाज 700 प्लस स्टूडेंट्स का ऑल ओवर इंडिया. उन्होंने सारे कोचिंग्स के रिव्यूज दे रखे. So there I got to know about Elite's Grit, how much highly it is reviewed only by the students. So there I got to know, I learned more about the आपके program के बारे में YouTube पे, and then I was like, I'm very sure I'm gonna go with that because online is not a matter for me. It's वैसे भी जाके वो और comfortable ही होगा because NM हाँ. जाके आना कॉलेज के साथ भी मैनेज करना है for internship also. So yeah, but I am really grateful I found this because not like उस time पे when I was joining, not a lot of people knew. But I was really shocked that the people who are very like serious about CAT, they knew about Elite Script. They knew about how much potential it has. And online classes में okay वो इतना deeply concepts पढ़ाते हैं. हनी सर गौरव सर को हर कोई जानता है, especially गौरव सर because of the YouTube पे उनके DILR के concepts की वजह से. तो कैट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है. कभी कभी स्टूडेंट्स तो थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं स्पेशली जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है क्योंकि स्कोर्स इतना फ्लक्चुएट होते हैं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल. टेंड टू गिव अप. तो उस टाइम पे जब आप लो फील करते थे या फिर जो चैलेंजिंग फेज था आपके लिए तो उस टाइम पे आप खुद को बैलेंस कैसे किए और वापस मोटिवेट कैसे करते थे?
आई थिंक जब मॉक स्टार्ट हुए थे अराउंड, सो आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स इन अगस्त बिकॉज मेरा बैकलॉग तब खत्म हुआ था, मेरा टेस्ट का बैकलॉग भी थोड़ा बहुत कभी तब खत्म हुआ था। तो स्टार्टिंग के 15-20 डेज तो मैं ऐसे हुए थे कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज आई वाज वेरी लो इन मॉक्स, मतलब वेरी वेरी लो इन मॉक्स, मैं टेस्ट पे भी इतना आउट परफॉर्म नहीं करती थी। एंड देन बिकॉज उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द बच्चों के मॉक स्टार्ट हुए थे, तो गौरव सर और हनी सर रेगुलरली वीडियोस डालते थे 10-15 दिन में कि बेटा लाइक यू गोना सी अ वेरी मच डाउनफॉल इन मॉक, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तुम अभी छोड़ दो, लाइक डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दी मॉक स्कोर, बिकॉज रियली उस टाइम के मॉक स्कोर का एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। उस टाइम के मॉक दे वर मोर फॉर द एनालिसिस। सो मैं जो ग्रो हुई हूँ, इट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस। मैं जिस टाइम पे थी और मैं जहाँ पहुंची, इट वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस। सर हमें रेगुलरली, मैं सर से भी चैट करती थी रोज के मॉक स्कोर्स का, हर दूसरे तीसरे दिन। तो 15 डेज डाउन द लाइन आई रियलाइज कि आई नीड टू डिटैच माई सेल्फ, मुझे देखना ही नहीं है स्कोर। मुझे स्कोर देखने के बाद वो आधा घंटे का ब्रेक लेने की बात की, अब हो गया, नाउ एनालाइज। तो वो जो डीप एनालिसिस होता था कि वीआरसी के एक एक क्वेश्चन में कितनी देर लगी, क्यों देर लगी, या उस टाइम पे व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस व्हेन आई वाज पिकिंग दैट ऑप्शन, और इन डीएलआर में व्हाई डिड आई गेट सो मच स्ट्रेस्ड, दीज वर द थिंग्स। स्टार्टिंग में कितना टाइम स्पेंड करना है एक एक क्वेश्चन को रीड करने में, तो वो सब चीजें एक्सप्लोर करना, आई थिंक जब उसके साथ कंफर्टेबल हो गए थे ना 1 महीने बाद, और थोड़े थोड़े मॉक्स स्टेबलाइज होके बढ़ने लग गए थे, देन आई थिंक आई वाज सॉर्टेड। देन मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मॉक्स इज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, बट इट वुड गेट प्रिडिक्टेबल व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इनफ। छोड़ना नहीं है उस चीज को, बिकॉज आधे लोग छोड़ देते हैं मॉक के टाइम पे, दैट इज नॉट व्हाट इज रियली एक्सपेक्टेड। तो कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वीआरसी एंड डीएलआर, राइट? तो was there any section in particular that you found challenging in the beginning? इट वाज डीआईएलआर, बिकॉज ऐसा होता था कि क्वांट में आई न्यू व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टू प्रैक्टिस, आई न्यू व्हाट, मतलब इट वाज कन्फाइंड, मे बी वो कन्फाइंड होता है कि तुम इतनी इतनी चीजें कर लो। सो इवन इफ क्वेश्चंस केम एंड आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, मुझे पता था कि कहाँ से क्यों, व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स। डीएलआर में मी बीइंग अ slightly ecstatic person was really got, मतलब बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूं, मैं बहुत डर जाती थी वो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में, इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ डूएबल सेट। मतलब आई थिंक इट टुक मी 1 month टू इवन सॉल्व वन सेट कंसिस्टेंटली इन दैट मॉक, कि मैं कट ऑफ भी क्लियर कर पाऊँ। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो आई थिंक वो, एंड वीए आई वाज सेफ, मतलब आई वुड नॉट से आई वाज वेरी गुड विथ वीए, बट वीए वाज समथिंग, वो चीज थी कि आई वाज एबल टू डू इट, आई वाज एबल टू न्यू व्हाट माय वीक एरियाज वर, आई वाज टू स्ट्रेंथन इट अ लॉट। एंड या सो डीआई अलॉट वाज वन थिंग, बट गौरव सर वाज रियली बिहाइंड मी ऑल द टाइम कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एंड वो और टेस्ट देते जाते थे, एंड वो टेस्ट को एनालाइज करने को बोलते थे, विच वाज रियली, जो मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज ऑफ माई बैकलॉग। तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प की थी फॉर डीआईएलआर, एनालाइजिंग द टेस्ट ऑल्सो। I would love to know how did you practice DILR to improve your performance? So there were these kind of tests for the actual. So sir started giving us these kind of tests from the very start. जो actual DLR sets होते थे, आई गेस उन्होंने मार्च से चालू कर दिए थे हमारे, धीरे धीरे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। तो मैं उससे जाके रिवाइज करने लगे बिकॉज बहुत समय हो गया था वो चीज करे हुए। तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग दैट एंड आई स्टार्टेड गिविंग मी कॉन्फिडेंस, बिकॉज डीआईएलआर इज मोर तुम्हारे डर को हटाना, नॉट एबल टू नॉट Yeah. डू द सेट, बिकॉज वो बाद में तो हो जाता है, बाद में पूरी तरह से 15 मिनट में सेट सॉल्व हो जाएगा, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 40 मिनट हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। सो आई थिंक सॉल्विंग दोज एक्चुअल आई एम सेट्स जो थे, कैट सेट्स जो थे, and real analyzing them again and again and able to score them again, that really helped me for DIR to increase my confidence, because I think that was the whole key, not the difficult to difficult set, because it was not about solving the most difficult set, it was solving the most comfortable that you're with. Also, you said that at the beginning your scores used to fluctuate a lot, and initial mocks may you scored very less, and then after that gradually consistent efforts के बाद धीरे धीरे वो stable होने लगा score. And you said that all this was because of your mock test analysis strategy. So I would love to know what was your mock test analysis strategy. So basically, I think the most pushing part of the whole cat prep is the mock test. Seriously. So it was like 2 घंटे का mock होता था, but it took me around starting में for the 1 or 1.5, it took me around 2 to 5, 2 to 2.5 hours to analyze it alone. Because what Gaurav sir told me was to how to ace your DLR was to solve all the sets again, no matter how much time it took you. And I think that was the key why my DLR improved after 20 to 25 days, that I was able to start solving sets. So मैं बैठ के उससे solve करती थी,
स्टार्टिंग में मैं टाइमर नहीं लगाती थी बिकॉज आई वांटेड टू सॉल्व इट, कि बस सॉल्व हो स्टार्टिंग में, एंड देन आफ्टर अ टाइम आई पुट माई सेल्फ ऑन अ टाइमर and that was doable. So that was for DILR. Same was for the QA. Now in QA, so whatever questions I was not able to solve, I used to note them down. एक डायरी बनाई थी मैंने, एक नोटबुक बनाई थी फॉर क्यूए. दैट वाज द की, बिकॉज इसीलिए क्यूए की रिवीजन बहुत ज्यादा लगता था, बिकॉज एवरी संडे सनी सर यूज्ड टू टोल्ड कि जितने भी आपने मॉक्स दिए, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द मॉक्स दैट यू गिव, इट्स हाउ वेल यू एनालाइज एंड रिवाइज इट. लास्ट महीने वही के थे. तो फिर हमने उसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे मैंने, टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. And VRC ke, what I would say was RCs I used to solve, because that was the main part where I was suffering, was the RCs. So RCs I used to solve again. I need to, and I actually analyzed कि मैंने एक option choose किया है तो क्यों. I used to question my own objectives into that and correct if the objectives were wrong, or maybe update them in what new strategy I need to apply. So this was how I used to analyze. तो वो 2-3 घंटा बहुत लगता था, but start after a point वो कम होते गया, and that is how my score थोड़ा increase होते गए. So approximately how many full length mock tests did you take throughout your preparation? I took around somewhere 25 to 30. It was around mid figure. I'm not able to remember. It's been a long time. Around 26 or 27 maybe. So Okay. yeah. In the end, some mocks I was not able to analyze well enough. But in the starting 2024 3 mocks were very much well analyzed. That is the reason थोड़ा सा improvement हुआ, वरना बहुत दिक्कत आती. वो सुनना बहुत 30 to 40. इम्पोर्टेंट है. गौरव सर एंड हनी सर यूज्ड टू like say कि don't miss the analyze. Legit, everyone used to, even I used to miss the not analyze it, skip to the next mock, let it go. But that is not the key for improvement. नहीं होगा improve अगर हम analyze नहीं करते तो. Rightly said. Also, 30 to 45 days before CAT, this time is very crucial. So, revision is very important because हर एक formulas सब कुछ fingertips पे रहना चाहिए, और फिर जो strategies आपने throughout the year बनाए हैं वो भी दिमाग में रहना चाहिए. So, how did you structure a revision in that last 30 to 45 days before CAT? I think the proper revision that I did was for QA, because DILR के more was आपके दिमाग में conceptual base. Once you're able to get in उस एरिया में अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो, देन इट्स ऑल अबाउट योर माइंड की शांति वाली चीज. वो DILR की बेसिकली रिविजन करना इज मेडिटेशन करना, कि खुद को शांत रखो 30-40 दिन पहले. दैट वाज दैट. एंड फॉर QA, बिकॉज हनी सर एंड गौरव सर यूज्ड टू schedule sessions for us for revision also, start end के 30 days में. तो उसके साथ साथ बिफोर, आई थिंक फ्रॉम द 45 डे तक जब तक बचे थे, आई स्टार्टेड माई QA revision. So that was my second QA revision actually. Before I gave my mocks, I did my QA revision once, and the second time जो basically हमारे foundational classes होती हैं for the concepts, for all the arithmetic, geometry and all these things, I did revision for them. दो क्लासेस करते थे 2x पे करके. एंड जो हमने नोट फॉर्मूला बुक बनाई थी फॉर क्यूए, उसको हम हर संडे मैं रिवाइज करती थी, जब लास्ट के 3-4 हफ्ते बचे थे, 5 वीक्स बचे थे. So that was how I revised. Basically, QA was the one I revised twice. Like the whole classes, जो हमारी classes हुई थी for arithmetic, जो भी foundation classes हुई थी हमारी, वो सबसे ज्यादा था. It was a lot, but because you're revising it 3 times, it kind of gets in your head. So I think that was all. And हनी सर बहुत बार रिविजन कराते थे. मतलब उन्होंने ऐसा लगा था कि हमें नींद में भी कोई पूछेगा, कोई लेजिट कोई भी ज्योमेट्री का ये वाला फॉर्मूला, हम सब बता देंगे कि सर्कल का इन रेडियस क्या होता है, एंड इन सेंटर इसका क्या होता है, एंड एवरी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने इतना हमें रटवा दिया था. सो आई थिंक दैट वाज ऑल दैट. दिस वाज हाउ वी रिवाइज्ड. So, other than CAT, did you appear for any other exam? Yeah, I appeared for NMAT, I appeared for SNAP, and I appeared for ZAT. These How were the did you exams. prepare? Yeah, so how did you prepare for the OMET? So I took a OMET course from EG only. So there were some very small other concepts for OMETs. They used to provide us classes. They were I would say much less hectic than CAT. थोड़ा सा वो अच्छा लगने लग गया था कि चलो थोड़ी इजी वाली चीज पढ़ रहे हैं. वो भी अच्छी लग रही थी CAT के बाद. बट yes, there were classes we used to do that. 2 घंटे की classes on a regular basis, जो सर शॉर्ट वीडियोस डाल देते थे. एंड फिर उसके मॉक्स, सो स्नैप के लिए भी देयर वर लॉट ऑफ मॉक्स, 1-1 घंटे के होते थे, तो उसमें तो बहुत मजे आते थे. बट यस, फॉर स्नैप एंड एनमैट, वो द मॉक्स वर गिवन बाय देम
सारे के सारे जो भी नए कॉन्सेप्ट्स थे, वीए में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ओमेट टॉपिक्स के जो वीडियोस होते हैं वो सर ने प्रोवाइड करे थे। सेम फॉर जैट के लिए एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्टेड। सो फॉर ओमेट एंड फॉर आई एम सॉरी फॉर स्नैप एंड एनमैट इट वाज कंपैरेटिवली लाइटर, बट व्हेन जैट केम, स्पेशली डिसीजन मेकिंग उनका, that was really when actual prep started, and that was, I won't say hectic, but it was heavy. It was heavy, but it was kind of worth it. It was a re-revision of the whole CAT thing that we did, whole QA, whole VA, and a decision making to the add-on. Coming back to the interview stage, share how you prepared for your interview. I think interviews was a very different arena that we never thought that iske aage bhi level hai interviews. So I was very weak in static GK and in current affairs also. The first thing that I did started was, because my IIM Lucknow interviews was in just 7 days, where I got the date, and 7 days I had my best call for interview. So I started reading newspaper. I started reading Instagram news. I started making note down of all the like daily news that I saw, best five news in that term. And other than that, I found sources, and they Hanisar and Gaurav sir also really helped me into finding a document for the static GK. So I used to like learn about the प्री लाइक प्री एलपीजी क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज रहती थी, उसके बाद क्या रहती थी. So these were things that we really thought, and the mock interviews really helped. So HR questions which we used to prepare for ourselves, that was one thing that we prepared, analyzing our personality deeply, ki who we are, what kind of picture do we want to portray in front of the interviews, because we need to be real to ourselves. They are going to make out. So that was one thing. So that was really helpful. The main part of the interviews, I think, was how comfortable I am in the interview room, and the current affairs and HR. And third thing was my graduation subjects. But I think I was really solid about the fundamentals and everything, because finance and being economics and all of that being the core of my interest, that was not somewhere I faced the issue. But interview prep was difficult, very much difficult. But I think they really helped me ace through it. So yeah, that is that. So when you saw that you have converted IIFT Delhi, what was your reaction? या फिर पहला thought क्या आया mind में? So basically पहले IIM Kozhikode was my dream school. तो मैंने उसमें LSM convert किया था. I was actually really happy towards that. But it was not where I could really, explore much about finance. तो अंदर में थोड़ी सी वो, I was really sad a bit that even converting my dream school, it's not really an actual dream come true. And I was waitlisted for IFT Delhi. I converted IFT Kolkata in the first merit list. So I was really crossing my fingers ki convert ho jaye, ho jaye. And I remember I was shopping with my father, and I saw the mail, and I really couldn't believe it. Seriously, because my whole IFT Delhi interview was, I would say it was very much weird, but it was very much true to who I am, really. So I had somewhere inkling कि हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब भगवान जी ने मेरे लिए बनाया है. So I was really happy. It was like all the moments of when I was really crying, like below, बिल्कुल ही इमोशनली हर्ट होके खत्म हो जाते हैं जब वो कैट प्रेप में और सारे इंटरव्यूज की प्रेप के बीच में, वो एक मोमेंट पूरा वर्थ इट दे देता है. So I think FT Delhi was, and it being a very good tier one school known for its finance, I think it's a very real, in sense, my dream come true for me. You mentioned that IIFT Delhi का interview थोड़ा सा weird था. So अभी एक क्वेश्चन याद आ रहा है, तो आई विल लव टू आस्क कि इंटरव्यू में इतने सारे इंटरव्यूज आपने दिए हैं, कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ कोई एक इंटरव्यू, कोई स्ट्रेस इंटरव्यू था आपका, या फिर ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं पैनलिस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट करने के लिए, या फिर रिपीटेडली एक के बाद एक पूछे जा रहा है टू डेल्व डीप इनटू सम क्वेश्चन, ऐसा कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं दे टेस्ट द स्टूडेंट्स. तो ऐसा कुछ सिचुएशन या कोई एक वियर्ड क्वेश्चन कुछ याद है आपको? आई थिंक आईएफटी दिल्ली में ही हुआ था मेरे साथ ये. सो दैट इज हाउ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मिरेकल था काइंड ऑफ मेरे पे, कि तब मेरा दिमाग चला टू थिंक इन दैट एरिया. सो आई वेंट इन द रूम, एंड आईएफटी दिल्ली इंटरव्यू वाज, it was the first interview which was four panelists taking an interview. And we have seen IAS interviews, no, like they have a very long hall, you're sitting in the middle of it. So I had given multiple interviews, like I'd given all the LKIS, I gave that, I gave CAP, I gave all the private colleges interviews. So this was one of the, I think the second last interview was there. और मैंने ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा था, मतलब मैं घुसी अंदर and I was like shit, I am done. How do I face them? It's a very stressful kind of thing. But then I went there, I sat. The first question they asked was, where have you traveled?
and I told these were the cities, Mumbai and everything. And they were like, what kind of rivers did you saw when you were traveling there? That was the first question I came across. The shit, I don't know the answer to that. I gave some of the rivers that I knew. एक आध उसमें तुक्के से निकल गई वो, but then he kept telling me about कि बेटा ये river तो north में जो आती है, this river goes at the east side and west. And that was the first question where because starting का question जब ऐसा होता है, you kind of lose your confidence a bit. The second question was really took me off the track. Like what? Okay, so which God do you believe in? So me, I am a Sindhi. So we worship Guru Nanak Ji. So I told him about that. So he was like, tell me 5 management skills which aligns with his teachings. Oh my So God. that so me being there amongst 4 male interviewers, middle in the long hall. So I was really deep. But I think maybe I had given so many interviews by then. And I don't know from what to, I was very much chill. A day before that, I had a migraine attack. So I was very not well. So I didn't study much a day before. I was very chill. Ki, theek hai. Whatever will go, it's been God's hand. So I remembered some very basic management skills I read about. He was part of Bhakti movement, and some of the things which Gurudwara is related hai. And I told them 5 managements about patience and somewhere about being open minded as managements are, because so that Gurudwara is the only place where menstruating women are allowed. So these kind of pointers, when I told them aligning with the management skills, I think that is what really piqued their interest into me, because that was who I am. So then the interview went towards this ki what are your NM का आपका experience कैसा था, and the आपके about my core subjects and all of that, my general extracurricular experience, why IFP, the normal interview. But then I think this being a very off track, but me nailing it gave me a confidence. So yeah, this kind of thing happened. What was your overall experience with Elite Grid? I think it was the best. I think I wouldn't have been able to ace cat. I wouldn't have been able to be where I am today without Honey Sir and Honey sir and Gaurav sir, because I think somewhere I feel thoda wo God gift hai, because I've all throughout my life I've been blessed with amazing teachers, and me finding both of them where at that point जब मुझे ऐसे कोई guide करने के लिए नहीं था, and then finally being in their guidance, I think that was one of the best gifts of my life. But they were really with all, like पूरे के पूरे journey mein at the back of you. I've never seen this kind of support from teachers where they handle so many students, like so many students where they are एक एक बच्चे की query personally हर किसी की life में help करना. That's a very big thing that they give, and that is what makes them really go. They are personally invested in towards each student's success. So I think that is what really makes them different. If you could give one important piece of advice to the CAT aspirants who are going to give CAT exam this year to help them improve their score, so what would it be? Um, it's about consistency. It's about keeping faith. So you need to, and most of all, being regular. That is the first piece of advice that I think the only advice that Gaurav sir and Hani sir kept giving us in the starting of the intro lectures. It is really about the regularity. If you're able to be regular, if you're able to follow every single thing that they say, do what they are telling you, amount times of revisions, times of making notes, giving tests on time, giving mocks on time, analyzing them, I think you'll really surpass your own expectations. आपने जो खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आप उससे भी सरपास कर जाओगे. It's just about literally putting a blindfold on your eyes and just following them. Literally, it's all about that, and it's about making consistency. Just detach yourself from what kind of marks you're having. Detach yourself from what kind of, I guess, what people are saying, what kind of discussions is happening among the peer groups and everyone. Just put your mind into it, and you'll be able to do it. It's really, you have these two people. They are going to put you at the other side, like put you like this very easily. That's a really helpful advice. Rightly said, consistency is very important because CAT journey is not very easy because it's a competitive exam and there's always a constant thought that you never know what will happen on the D-Day. So yes, it's very competitive. So consistency is very important and trusting the process, of course. Thank you so much for sharing your amazing journey with us and for sharing everything so honestly. How did you prepare and then giving so good insights about EG? So means a lot. Thank you so much for joining.
वंस अगेन अ बिग कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस होलसम अचीवमेंट। जो लोग अभी कैट दे रहे हैं वो लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपके स्टोरी से इंस्पिरेशन लेंगे, कैसे कैसे आपने पढ़ाई की, क्या क्या आपने फॉलो किए। तो बहुत अच्छा जर्नी रहा आपका, थोड़ा सा तो चैलेंजिंग रहता ही है, बट यू बहुत स्ट्रांगली आपने ओवरकम किए एवरी फेजेस जो भी आपका था। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।